से लॉक फाइल ऊपर आमे जानिबा लॉक फाइल जानिया पूर्व हम जानिया पड़िबो वर्जनिंग तो आमे जतबळे प्रोवाइडर वर्जनिंग जतबळे गोटे प्रोवाइडर ब्लॉक लिखितले राइट जतिरे आमे देखितले प्रोवाइडर वर्जनिंग राइट केमती प्रोवाइडर वर्जनिंग आमे करि परिबा तो इटी आमे देखिबा कोन provider versioning कौन ना provider plugins are released separately from terraform itself. They have different set of versions numbers. So जंती कि हम जानले गोटे provider plugins ला कोन set of programs गोटे plugin जोटा कि जो भी provider plugin हमें यूज करिया तार set of versions अछि different version because every update they create a new version right तो ताको केमती हमें सेट करिबा हमर configuration file तो ये कौन कोछि ना during terraform init हमें मतलब initialization as a करू right during terraform init if version argument is not specified the most recent provider will be downloaded during initializations that's why we should be very specific what we are going to use what version of provider we are going to use see तमे जदी R&D कोच बा तमर निजर प्रैक्टिस कोच ट्रेनिंग नोच तो तमे सेठी जदी डायरेक्ट विदाउट प्रोवाइडर वर्जन मेंशन करिकरी जदी terraform init करि दोच तो कोन होछि ना से कोन कर लेटेस्ट वर्जन जहा भी अछि प्रोवाइडर सेटा को डाउनलोड करतबो राइट तो हमें देखो जे कोनसी terraform infrastructure setup करिबा आगरु बा एक्जीक्यूट करिबा आगरु जदि किछि नुवा infrastructure हम क्रिएट करूचे terraform configuration file लिखुचे तो बेसिकली हमको terraform init रन करिया पड़ियो जे मोडे नुवा प्रोजेक्ट करूचे तो terraform init कले कोन होबा ना से जो प्रोवाइडर हमें स्पेसिफाई करथिबा सेही प्रोवाइडर को से डाउनलोड करिके रखिबो जोटे कि हमर terraform एक्जीक्यूट करिया पई हेल्प करियो राइट तो ताको हमें एक्सप्लिसिटली हाउ वी कैन सेट इट अप तमे देखिथिले जो terraform required provider थिला राइट required providers सपोज हमें AWS प्रोवाइडर यूज करछे तारो कोन वर्जन्स हमें यूज करियो तो सब बळे कंपनी रे तो हमें काम करछे राइट कुटे स्पेसिफिक वर्जन्स हम यूज हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिया पय तो हमें एग्जैक्टली से स्पेसिफिक वर्जन यूज करिबा जदी तमे डिफरेंट वर्जन्स यूज करूछो तो ऑलरेडी उटे इंफ्रास्ट्रक्चर तमर क्रिएटेड अछि तो यू कैन नॉट यूज another version right तो ता पे हमें लॉकिंग विषय जानिबा तो एठी हमें लिखि छे कोन ना version equal to child symbol greater than right symbol 3.0 तो आ माने कोन हला ना any version within range 3.x versions माने 3.0 3.1 2 3 4 5 up to 9 any versions within that range we can use the provider plug but एठी हमें कौन बोले ना specific versions नहीं गले जोटा कि 3.27.0 तो आरी particular versions हमें ए particular versions हमें यूज करि पाइबा ओके तो सेति में तुम आइदर जोटा भी नोच सब बेले बी स्पेसिफिक versions सिलेक्ट करो राइट जोटा कि तुम infrastructure build up by infrastructure create time easy habo तो particular version which is recommended to use तो तुम सब बळे recommend कराउछ करिवा यूज करिवा कथा जे 3.27 बा स्पेसिफाई कर को वर्जन तुमको दरकार ओके सो एठी कोन कहूछ ना explicit setting during terraform init if version argument is not specified the most recent provider will be downloaded during the initializations. The latest versions will be downloaded. Okay, the most recent version, that is latest version. So for production use, we constrain the acceptable provider version via configurations to ensure that new versions with breaking changes will not be automatically installed. So, जोटा में there are development platform बा कोथरे use करूचे it's okay but in production case रे जदि हमें किसी specify न करिबा then it will be a problem इटा मन रखितो क्वेश्चंस डेफिनेटली तुमको आसीबो ओके केमती कोन वर्जन्स ए वर्जन्स केमती समय सेटअप करिबो राइट तापर कोन आछे हमरो हमें देखिबा जो लॉक करता तो मन अछि हमें तापर गोटे terraform init
फर्स्ट टाइम जेतबेले हमें एग्जीक्यूट कले राइट सेतबेले गोटे .terraform.lock.hcl गोटे फाइल क्रिएट कला .terraform.lock.hcl तो ये फाइल टा कोन एक्चुअली एटा गोटे लॉग फाइल तो ए लॉग फाइल रे हमर को वर्जन रो प्रोवाइडर यूज करे ता इंफॉर्मेशंस थिबो the above log file will help to prevent installation of any lower version of the provider accidentally. The file contains the exact version of the provider plugin installed and constraint. Also, it contains the exact path of the provider plugin. If you want to install lower version, then delete the existing log file and then execute the Terraform init. Okay, simple. So, the question is how Terraform uses the log file to prevent the installations, or they can ask how the Terraform prevents the accidental installations of the lower versions of Terraform provider or any provider. So we can use by log file. Okay, Terraform log file. Now when the Terraform log file will be created, तमे जेतबेले Terraform init use करिबा initialization करिबा सेतबेले हमर Terraform log file टा क्रिएट हबो तमको जदि किछि कोन lower versions install करियर अछि then what we can do we can delete this इटा गोटे फाइल टा थिबो राइट तो इटा को टाइप रो फाइल मते की कहि परियो तम भितरु इटा लिनक्स रे गोटे को टाइप रो फाइल अछि .terraform.lock.hcl hidden file exactly so इटा गोटे एक्चुअली हिडन फाइल जोटा कि नॉर्मली हिडन हेकरी थिबो तमे नॉर्मल ls-l मारिबो तो ए फाइल टा शो करिवनी तापे जदी तुम ls-la मारुचो देन फाइल टा ls-a बा la देन ए फाइल टा डिस्प्ले करिवो राइट तो हाइड हेकी थाए कनेक्ट जेतोल तुम लोअर वर्जन एग्जीक्यूट करिया जाउचो देन you can delete this file to install the lower version. Okay, next let's understand the attributes. हमें एते पर्यंत कोन सब attributes पढितले राइट आर्गुमेंट्स पढितले आर्गुमेंट जानितले केमती हमें यूज करबा गोटे रिसोर्स ब्लॉक हो बा प्रोवाइडर ब्लॉक हो आर्गुमेंट्स हमें यूज करतले राइट सपोज एज पर्टिकुलर स्निपेट हमें देखिबो एतरे द्वारा मु यूज करिछि एठी कोन रिसोर्स AWS underscore security group मेटी कोन करछि गोटे रिसोर्स ब्लॉक यूज करिछि जोटा कि क्रिएट करूछि गोटे कोन सिक्योरिटी ग्रुप आ पर्टिकुलर पोर्ट को व्हाइट लिस्ट करूछि एठी को पर्टिकुलर पोर्ट व्हाइट लिस्ट करूछि ना 443 ए 443 को व्हाइट लिस्ट करूछि राइट तो एठी नेम कोन हला ना गोटे आर्गुमेंट ingress tags those are things the arguments माने ए रिसोर्स रो ए आर्गुमेंट तो मु एतले कहितली तुमको से आर्गुमेंट रो सब तमे एतले यूज करूछ तार एट्रिब्यूट्स तमे यूज करि परिबो तो एट्रिब्यूट स्पेसिफाई कोन करूची एटी देखो रिसोर्स EIP एसोसिएशंस माने इलास्टिक आईपी जेतो हम क्रिएट करूचे ताको कोठी एसोसिएट करूचे राइट एटा हला कोन एसोसिएशंस को EIP एसोसिएट करूची तो इंस्टेंस अंडरस्कोर आईडी हला कोन आर्गुमेंट एटी जति .id यूज कराउची राइट AWS underscore instance dot my underscore terraform underscore इटा गोटे नेम टा जानितो एटा कार नेम हेबो ना AWS underscore नेम हमें तो करिबा नेक्स्ट एग्जांपल हम बते देबी तो .id जोटा कि हमर एट्रिब्यूट ओके सो एट्रिब्यूट्स पर्टिकुलर ए पर्टिकुलर रिसोर्स रो एट्रिब्यूट ए आईडी थाबो ए रिसोर्स रो जो रिसोर्स यूज होबो तार एट्रिब्यूट एटी जोटा पब्लिक आईपी यूज होला EIP तार रिसोर्स okay attributes so attribute kono an attribute is basically a value block associated with specific property of a resource gote resource ro gote property seta id jemti ki gote resource la suppose amar AWS underscore instance to ame eta use korche kon gote EC2 instance create kariya pai to EC2 instance to ame create karuche to tar kichi kono amaro बराबर AWS underscore instance हमें यूज करूचे तो सेठी कोन हो तार किछि
प्रॉपर्टी थी राइट कुछ आर्गुमेंट आउ कुछ एट्रीब्यूट थी जो एट्रीब्यूट कौन वैल्यू स्टोर करतो जेमती कि इंस्टेंस आईडी पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी राइट एआरएन नंबर तमरो इमेज डिटेल्स कंप्लीट जानि पारे तमे तो ये जो AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस मु यूज करछ हमें कोन गोटे AWS इंस्टेंस प्रोविजन करिया पई क्रिएट करिया पई यूज करछ तो यार एट्रीब्यूट सेक्शंस को हमें जल्दी जिपा if we go little below see argument section रहला तमे कोन कोन आर्गुमेंट यूज करि परिबो रिसोर्स सहित AMI पास करबा जोटा हमरा इमेज पास करिबा राइट तापरे ये सब कंप्लीट डिटेल्स अछि राइट कोन कोन पास करिबो सेमती तार एट्रीब्यूट सेक्शंस बिलो हमें जदी टिके जिबा कंप्लीट एट्रीब्यूट सेक्शन से रिसोर्स रो जोटा AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस रो तळे थिबो okay so you can search it but let's go attribute okay attribute reference okay तो attribute reference रे देखो ARN ता कहार जो रिसोर्स हमें नबा EC2 तार ଗୋଟେ प्रॉपर्टी होते तार ଗୋଟେ वैल्यू ARN दले हमें सो जो इंस्टेंस क्रिएट करे से इंस्टेंस रो ARN हमें पाई छिबा ARN ऑफ द इंस्टेंस ID ऑफ द इंस्टेंस ID राइट इंस्टेंस स्टेट माने वर्तमान इंस्टेंस रनिंग अछि कि पेंडिंग रे अछि कि सेटिंग डन शटडाउन होछि कि टर्मिनेटेड हे अछि कि स्टॉप्ड से तमे तार ଗୋଟେ स्टेज जानिया पई तो सेटा तो पर्टिकुलर तुम कोन दबना ଗୋଟେ वैल्यू डिस्प्ले करिवो तो सेति पे हमें एट्रीब्यूट यूज करछि जो रिसोर्स रो वैल्यू प्रॉपर्टी तुमको दरकार सही रिसोर्स रो एट्रीब्यूट यूज करिवो एति मन रखता जो रिसोर्स रो प्रॉपर्टी तुमको दरकार सही रिसोर्स रो एट्रीब्यूट यूज करिवो तो मु धर सपोज गोटे AWS इंस्टेंस क्रिएट कली से इंस्टेंस रो मते पब्लिक आईपी दरकार देन मु कोन करिवि ना ता एट्रीब्यूट कोन पब्लिक आईपी पब्लिक अंडरस्कोर आईपी यूज कर करी तर जदी मु इलास्टिक आईपी यूज करछि देन AWS अंडरस्कोर EIP if you are using then if you are install you should reference EIP's address directly okay so public IP में यूज करछि then public IP वॉल्यूम आईडी कोन वॉल्यूम अटैच हेछि then वॉल्यूम आईडी हमें देखि परिबा सेमती डिवाइस नेम कोन दिया हेछि राइट कंप्लीट डिटेल्स रे हमें देखि परिबा राइट सेटल हमर कोन ना एट्रीब्यूट्स ओके एंड पहला तब जो एट्रीब्यूट को हमें डिस्प्ले करिया पई गोटे आउटपुट वैल्यू बा तोर आउटपुट ब्लॉक हमें लिखि परिबा आउटपुट वैल्यूज तार देखिबा पई मैं आउटपुट ब्लॉक लिखि परिबा तार गोटे रिसोर्स हमें यूज कले AWS अंडरस्कोर EIP तार आउटपुट हमें तमे देखो आइदर एठी मु कोन करछि ना एठी सब रेफरेंस नि आइछि एठी सब रेफरेंस नि आइछि माने एई थ्रू एई रेफरेंस रे ए कंप्लीट वैल्यूटा असाइन हला कोडी ए आर्गुमेंट रे राइट allocation underscore id instance id कोन एटा id तो एटा हला कोन तुमर रेफरेंस तार ए पर्टिकुलर आईडी को से रेफरेंस करछि बट एठी कोन करछि हमें डिस्प्ले करिवा तो डिस्प्ले करिया पई वैल्यू टाइप जोटा आउटपुट वैल्यूज आर बेसिकली यूज्ड फॉर आउटपुटिंग द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट कोन से ई एक्टर तो हमें पब्लिक आईपी जानिया को चाहूचो जेमति एठी मेंशन कराइछि पब्लिक आईपी तुम डिस्प्ले करिया पई चाहछि देन तमे कोन करबो ना आउटपुट वैल्यू यूज करि परिबो आउटपुट जे कोन गोटे नाम नै गलो तर वैल्यू इक्वल टू AWS underscore EIP dot myEIP dot public IP तो से कौन करियो ना public IP डिस्प्ले कर दो तो public IP ला attribute of AWS underscore EIP right AWS underscore EIP रो attribute डिस्प्ले तार डिटेल्स हमें देखिबा ओके तो आउटपुट केमति आसीबो ना EIP ओके तो attribute जानले तापरे ओके terraform format और validity के ऊपर जानिबा terraform format बहुत इजी गोटे कमांड जस्ट कोन यूज करिबा terraform fmt to do the format to do the alignment I can say readability format right for better readability हम जो फॉर्मेट यूज करछे तो हमें लेखुतिले राइट terraform तो हमें जे कोनसी जगह रे कोन इक्वल टू हमर जो इंटेंडेंट रोतला इंटेंडेंट हमें परफेक्टली देउ नथले ताकि जे हमें परफेक्टली इंटेंडेड हिसाब रे साइज करि के रखिबा बा रीडेबिलिटी वाइज देन वी कैन यूज दिस terraform fmt ए पर्टिकुलर terraform fmt कमांड यूज करले बर्तमान देखो एटा बर्तमान हमें लिखिचे
लिखिचे कोड आम मन इच्छा जो रखीचे इक्वल टू एटी रही हिसाब से आर हिसाब से इक्वल टू एटी अच्छी बट मुझे टेराफॉर्म फॉर्मेट यूज कर देख स्पेस नहीं कि इक्वल टू रखी देकी माने सेदी इटा बेटर देखा जाउची रे इटा आठारो तो इटा टेराफॉर्म फॉर्मेट रा यूज हो बट अब बर्तमान हम पढ़ी दउची तापर हम जस्ट छोटो से जो इन नबा तार लैब गोटे करबा ओके terraform validate okay terraform validate actually a very good command so ame last first initial class रे कोन जानथले जे ame resource और provider block विषय रे जानुतले तो सेतबे ame directly resource लिखि तीनटा command basically ame जानितले कोन terraform init terraform plan then terraform apply ता सहित ame terraform refresh विषय रे भी जानितले जेतबे ame state पढितले कोन ना current state को refresh करिया पई स्टेट फाइल को रिफ्रेश करने विथ करंट स्टेट हम यूज करथु कोन terraform रिफ्रेश कमांड चारटा कमांड विषय जान तबे हमें कोन जानिबा ना terraform फॉर्मेट जानले fmt और terraform validate तो validate कोन करियो ना हम जे कोनसी प्रोग्राम हम लिखिले राइट तो बिफोर एग्जीक्यूटिंग terraform प्लान तमे जो कमांड लिखिचे बा कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखिचे राइट सेटा एक्चुअली ठीक अच्छी ना नाही राइट ताकू वैलिडेट करिया पे हमें terraform validate कमांड सिंपल तो एठी कोन आंसर दबो ना दैट कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड यदि किछि भी प्रॉब्लम रहला देन syntactical error दबो so when we do terraform plan directly terraform first performs terraform validate तमे वैलिडेट को सेपरेटली यूज करिया दरकार नहीं हमें तो terraform plan यूज करूचे देन automatically terraform first validate then execute the plan command तो हमें तो terraform plan यूज करचे से फर्स्ट एटा terraform validate then terraform plan execute करची ठीक है कथा बट समटाइम्स हमको terraform plan करिया नहीं खाली कोन हमरो देखिबार अछि कोडा configuration file ठीक अच्छी ना नहीं then we can go with validate okay next load order okay load order और semantic विषय में ऑलरेडी जानी सारी छे semantic कोई सच राइट डिफरेंट फाइल करिगरी डाउथरे semantic विषय बुझे दोची terraform orders load orders और semantics भीतर तो लास्ट क्लास रे हमें देखितले कोन लास्ट टू लास्ट क्लास में वेरी बिगिनिंग राइट वेरी फर्स्ट क्लास रे हमें देखितले गोटे कॉन्फ़िगरेशन फाइल रे हमें कोन मल्टीपल रिसोर्स ब्लॉक रखितले राइट प्रोवाइडर ब्लॉक रिसोर्स ब्लॉक रखितले त सिमेंटिक्स रे कोन यूज होछ ना हमें जो भी गोटे सिंगल फाइल करथि त केमति मल्टीपल सेग्रीगेट करिकरी डिफरेंट रिसोर्स को डिफरेंट रिसोर्स फाइल रे कॉन्फ़िगरेशन फाइल रे रखिबा तो सेटा हमें कोन पई रखिबा terraform generally loads all the configured file within the directory specified in alphabetical order तो जो भी डायरेक्टरी भीतर हमर कॉन्फ़िगरेशन फाइल सब रहउची ताकू से अल्फाबेटिकली ऑर्डर रे एग्जीक्यूट करे लोड करे राइट so it's always advisable to separate the blocks into different files it will help to identify any issues quickly जो भी इश्यूज असला क्विकली ऑब्वियसली त हमें तोरा गोटे एग्जीक्यूट करछे किछि इश्यूज असला स्पेसिफिक टू सपोज वेरिएबल्स बा किछि इश्यूज असला यूजर क्रिएट त हमें कोन करे हम जानछे हमें im_user फाइल रे जाइकरी सेटा को एग्जीक्यूट माने से पर्टिकुलर इश्यूज जहा भी रहउची ताको फिक्स करे अछि ए पर्टिकुलर फाइल im_user जदि किछि EC2 इंस्टेंस रिसोर्स ब्लॉक रे किछि इश्यूज असला देन वी कैन गो हियर एंड फिक्स इश्यूज हियर इटसेल्फ तो सेति में सेपरेट तब तक सिमेंटिक्स ऑर्डर रे हम सेटअप करियो ओके तो terraform show आउट एक कमांड असला जोटा कि हमें हमर जो स्टेट फाइल हम देखितले राइट स्टेट फाइल को नॉर्मली कोन थिबा ना से गोटे जेसन फॉर्मेट रे रोच राइट जो फॉर्मेट ता हमें कोन ठीक डिफिकल्ट होची पढिबा पई राइट जेसन फॉर्मेट रे रोच तो ताकू हमें कोन चाहूचे जेमति गोटे प्लेन फाइल रे नॉर्मल कंप्लीट डिस्प्ले करिवो वन आफ्टर अनदर तो एटा यूज होची कोन हम यूज करछि terraform show तो से कोन करबा terraform show रे कोडी डिटेल्स सब आनिबो ना हमर स्टेट फाइल रो ओके सो इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड ह्यूमन रीडेबल आउटपुट फ्रॉम ए
state or plan file. This can be used to inspect a plan to ensure that the planned operations are expected or to inspect the current state as Terraform says it. Okay, जेमती कि आमे Terraform गोटे देखो आमे Terraform state रो फाइल टाକୁ verify करे भले right किछि इंस्पेक्ट करिवार अछि इंस्पेक्शन करिवार अछि तने आमे कोन करिया स्टेट फाइल भितर को जाई कि ताकू चेक करिया पड़ियो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट बट आमे Terraform शो करिवा इटा फॉर्मेट दिस केते सुंदर होय रे एटा हमको डिस्प्ले करूछि राइट वेरिएबल सेक्शन सा नेक्स्ट पढिबा ता पूर्व आर छोटो डेमो गोटे जे जा भी कमांड्स पले ताको हम तुमको देखि दोछि ओके okay so let me log in first okay so last class रे हमें कोन हमरा गोटे डायरेक्टरी बनेइतले त ई डायरेक्टरी विषय जिबा ओके तो हमर एच किछि स्टेट फाइल्स अछि आउ हमर किछि कॉन्फ़िगरेशंस फाइल हमें क्रिएट करतले राइट तो ए कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऊपर ही हम काम करिया जा भी कमांड बटन पढिले तापर डिस्कशन करिया ओके लेट्स शो यू वन फाइल सो फर्स्ट थिंग अछि हमर अदर EC2 इंस्टेंस ता मु देखौछि ओके जेमति कि देखो तो ई जो फॉर्मेट गोटे रोची राइट तो ई फॉर्मेट को मुदर बेटर फॉर्मेट वेरी करबा पय चाहूची देन मु कोन करबे ना सो जस्ट मारबी terraform fmt ओके से कोन ई जो जेति फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल सब जगह फॉर्मेट से चेंज कर दला तो बर्तमान मु सेटा को पुनी आउते कैट मारुची देखो एटा आगुर केम देखा जातला राइट केमती रहतला तब केमती से फॉर्मेट कर दला कंप्लीटली इक्वल टू पूरा लाइन रे फॉर्मेट कर सिंपल कमांड तमरो जस्ट गोटे रीडेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बेटर रीडेबिलिटी पाई तमे यूज कर परिबो सिंपल एति आउ किछि नै हला तो हाउ बाकी जदी हमें जो वैलिडेट ऊपर पढिले terraform validate राइट टू वैलिडेट द कॉन्फ़िगरेशंस फाइल तो terraform प्लान हम जतो एग्जीक्यूट करू से फर्स्ट हम वैलिडेट करे तापर प्लान कमांड एग्जीक्यूट करे तो बर्तमान मु एबे कोन कोछि ना सपोज मते प्लान एग्जीक्यूट करियर नै मते सिंपल वैलिडेट करियर छु वेदर the configuration file whatever I have written is correct or not syntactical correct or not so mu kon kare use kori terraform validate okay let's see jodi validate then देखो success देखेबो तापरे देखो configuration files are correct okay तो तमे हम जानि सुनि गोटे भूल करिबा तादरे गोटे configuration file रे okay success the configuration file is valid right configuration file is valid now मते गोटे छोटो configuration file suppose changes करियर अछि तो EC2 instance file रे मु एठी गोटे change सेठी की नेम रे जस्ट एटा को मु डिलीट कर दोछि nme कर दली कोन आर्गुमेंट मोर भूल हे गेला तो ये आर्गुमेंट की अंडरस्कोर nme is not a valid argument of aws_instance resource right तो माको कोन कर सेव करी करी आउथर terraform validate मारिया देखिया हमको कंप्लीटली शो करि दबो कोठी syntactical error अछि ओके so unsupported argument key underscore name so an argument named key underscore name is not expected here do you mean key underscore name okay तो एडी से कंप्लीटली दिखेतला राइट से भी किछि भी जदी प्रॉब्लम अछि त हमें वैलिडेट यूज करी करी इजीली वी कैन फाइंड इट आउट राइट तो लेट मी फिक्स इट तो मु कोन करबी इट नेम इट्स करेक्ट ओके सेव इट terraform validate तबे कोन करियो से terraform validate यूज करियो ओके हेलो सर जल्दी वैलिडेट नंबर क्या है प्लान भी हेलो हेलो सर हां सॉरी विजय हां को चलिए सर जल्दी हमें जो वैलिडेट भी जा करछे प्लान भी जल्दी हमें terraform प्लान मारछे ना तो से भी जल्दी कोड भी एरर तो से भी जेटा शो करे एग्जैक्टली से भी शो करी
हाँ सेति पई हमें उधर एटी हम प्लान एग्जीक्यूट करिया नहीं कारण प्लान एग्जीक्यूट कले आउरी अधिका टाइम नबो राइट तो वैलिडेट कर देले से डायरेक्ट वैलिडेट करी हमु देखे दो यदि हमें प्लान भी यूज करूची तो प्लान रे फर्स्ट ए एरर टा ही देखेबो सी राइट किछि भी हमें यूज कर कारण प्लान रे से कोन करजी तो सेति पे हम कहले प्लान रे से कोन फर्स्ट वैलिडेट करूची तापर प्लान एग्जीक्यूट करूची तो वैलिडेट कर हमें वैलिडेट रे जो एरर आसिला प्लान रे से एरर आसीबो but little different with plan statement something आसीबो तो हमें कोन बेसिकली मोदी प्लान रे किसी एग्जीक्यूट करिवार नाही देन हमें कोन करबा एटा डायरेक्टली वैलिडेट यूज कर परिबा तो हमें जदी प्लान यूज करूचे तो प्लान भी डायरेक्टली से एटा ही शो करबा हमको वैलिडेट तापर प्लान फेल हे जो जेतु वैलिडेट ही फेल हे गेला तो प्लान टा हमरा शो करिवनी सिंपल एका कथा त वैलिडेट यूज भी न करि पारो डायरेक्टली प्लान भी यूज करिवो हम सेम एरर ही देखेयो ओके कोड एग्जैक्टली कौन एरर अछि प्लान रे भी देखो कारण प्लान यूज करूची वैलिडेट ही ना फर्स्ट ओके गुड सो हमें टेराफॉर्म प्लान देखिले टेराफॉर्म सोड हमें देखिबा तब सिमेंटिक ऑर्डर विषय जानिले टेराफॉर्म फॉर्मेट विषय जानले हमें से एट्रिब्यूट आउ आर गोटे एग्जांपल नबा आउटपुट वैल्यू ओके एट्रिब्यूट आउ आउटपुट वैल्यू ओके तो आउटपुट वैल्यू तो हम कोन करछेबे छोटो चेंजेस करछ कोडू ना vi s2 एटी गोटे ए रिसोर्स ब्लॉक रे आ गोटे ब्लॉक लिखि दोची जोटा कि हमर सॉरी जोटा कि हमर आउटपुट ब्लॉक ओके आउटपुट ब्लॉक आउटपुट रे नाम दे देली सपोज ec2 अंडरस्कोर ip कि छोड़ दे ec2 अंडरस्कोर ip जे कोन सी ना मटी ip देछि मटी ec2 अंडरस्कोर ip दे देली ओके तो मटी कोन करबी देला परे मते कोन करियर अछि just simply value लिखा अछि इक्वल टू मते कोन वैल्यू दरकार ना मते एई रिसोर्स रो मते दरकार सपोज ec2 इंस्टेंस रो आईडी दरकार तो मु कोन करबी ec2 इंस्टेंस रो आईडी माने मते को रिसोर्स दरकार ना aws अंडरस्कोर इंस्टेंस दरकार राइट aws अंडरस्कोर इंस्टेंस नहीं गली तापर मते ए जो aws अंडरस्कोर इंस्टेंस बा जो रिसोर्स ना टाइप हम यूज करछि तार कोन मु ना देछि तार ना देछि फर्स्ट लैब अंडरस्कोर डेमो सर्वर राइट तो मैं ठीक काम करबी सही पर्टिकुलर फर्स्ट लैब अंडरस्कोर डेमो सर्वर दे दे तापर मते कोन कर अछि एबे मते यूज करे अछि एट्रिब्यूट मते एट्रिब्यूट यूज करे अछि तो कार एट्रिब्यूट यूज करबो ना aws अंडरस्कोर इंस्टेंस एट्रिब्यूट यूज कर प्रॉपर्टी मते ओटे शो करियर अछि तो प्रॉपर्टी ना सपोज में इंस्टेंस आईडी शो करियर अछि तो मते देखियो पड़ियो इंस्टेंस आईडी पई प्रॉपर्टी कोन एट्रिब्यूट ता कोन तो इंस्टेंस आईडी पई कोन इंस्टेंस अंडरस्कोर आईडी राइट पड़ाला एट्रिब्यूट सॉरी खाली आईडी नॉट इंस्टेंस अंडरस्कोर आईडी हम यदि खाली आईडी दबा देन हमको से इंस्टेंस आईडी शो करिवो राइट तो हमें जदि स्टेट देखियर अछि इंस्टेंस अंडरस्कोर स्टेट दबा तो मते एबे सपोज कोन कली आरो आईडी देखियो पई चाहू इंस्टेंस आईडी ता कोन यदि पब्लिक आईपी देखियर अछि पब्लिक अंडरस्कोर आईपी मते देबी तो नेक्स्ट एग्जांपल में लिखि देबी ओके नाउ सेव इट इटा हम कोन बर्तन एट्रिब्यूट यूज कली ओके देन तबे टेराफॉर्म डायरेक्ट प्लान मारिबा just hold on okay terraform plan कोन हला हे गला तो हमको वैलिडेट फर्स्ट कोन सी कोन वैलिडेट ही करूची वैलिडेट करे प्लान कला छाड़ा हम तो किछि भी डिस्प्ले ही करिवन त हम एग्जीक्यूट अप्लाई करला पर जाई कि आईडी हमको दबो कारण एग्जीक्यूट हेनी ना आईडी को डानिबो आईडी शो करूनी त हम फर्स्ट एबे अप्लाई करिबा ओके अप्लाई so it's now executing creating the keys creating the groups okay attaching it and then creating the server सेठी कोन करबो ना सर्वर क्रिएट करि सारिला परे जाइकरी से हमर इंस्टेंस आईडी ता शो करिवो ऑलरेडी एठी इंस्टेंस आईडी देखै दोची जोटा कि हमर लॉग हिसाब रे
बट हमर जो प्रिंट करतले आउटपुट वैल्यू हिसाब रे सेटा हमर शो करिनी ये तो रिसोर्स ब्लॉक सरी गला पर जतो हम ये ब्लॉक टा आसीबो देखो आउटपुट ब्लॉक्स आसला राइट आउटपुट कोनला हमर ec2_ip मु देइतली ता नाटा ec2ip देली ip की बट आईडी मु शो करेली ओके तो मु कोन करबी आउथरे जस्ट एडिट कर दोची ताको मैं एठी कोन करची ec2ip न लिखी instance_id ओके सेव कले तो मैं ये चीज यदि अप्लाई करी कोन हबो ऐसे किसी एग्जीक्यूट हबोनी राइट काहे ऑलरेडी the infrastructure is created as part of the previous executions 3 resources are created okay so it is nothing null no changes required because already the current state is equal to the desired state so no changes okay but output amar show karibo देखो मु जस्ट चेंज कली instance_id से बार instance id टा शो करेला राइट तो मते जदी सेमती जहा भी मते दरकार थरो एटा गोटे जस्ट नाटा राइट जहा भी तमे देई परिबो तम हम हिसाब रे ही से प्रिंट करूची राइट धर जोटा कि मीनिंगफुल ना दबो जहा तमे वैल्यू खोज से हिसाब रे जदी ना दबा को चाहूछ देन सपोज मु पब्लिक आईपी एटा गोटे नउची तो एठी मु कोन देबी आईडी जगह रे इंस्टेंस आईडी जगह रे ना public underscore IP जो attribute हमें यूज करिबा to display the public IP of this resource right of this instance तो हम display करछि तो हम apply it will not execute anything okay because already the current state is equal to the desired state right so no changes yes fine so 000 but IP address हमको मिल गला see so based on the attributes जहाँ भी property दरकार हमर resource रे हम attribute use करि परिबा त हम easily तम attribute sections use follow करि परिबा okay बुझि पालो तो बर्तमान हमें देखिबा हमर state file किछटा create हेतिबो right गोटे tf state file create हेछि तो बर्तमान मु जदि ये tf state file टा को ओपन करिबी तो को फॉर्मेट रखिबो देखिबा see हमको JSON format रे सब जगह रोची तो it will be little difficult right to read all this to troubleshoot some issues or some किछ इंस्पेक्ट करे अछि त हमको टिके प्रॉब्लम आसी राइट एते सब भीतर जाई करी सर्च करी करी ताकू ये करिया पाए आइदर तमे ग्रेप यूज करी करी एटा गोटे जेतु लाइनक्स तमे यूज करछ ग्रेप यूज करी के तमे कोनसी डिटेल्स पाई परिबो बट हम जदी terraform शो यूज करिबा जो कमांड हमें देखितले तो से कोन करबो ना कंप्लीट डिटेल्स हमको शो करि दबो राइट लेट्स सी तो सेटा हम देखितले JSON फॉर्मेट रे देखितले कोन स्टेट फाइल रो जदी किछि हम इंफॉर्मेशंस आनिबा को चाहतले ओके आउटपुट्स तो हमको देखेला एटा आउटपुट्स ही देला लेकिन पूरा डिटेल्स रे हमको दे दोछ EMI कोन ARN राइट पूरा डिटेल्स रे दे दोछ ओके the VPC ID आउड एला तमे कोन तमे जहा भी दरकार तमे जदी पूरा फैमिलियर थिबो आर्गुमेंट ना हिसाब रे राइट तमे डायरेक्टली भी सर्च करि परिबो हेथि डायरेक्टली सर्च करे केमति सर ना सपोज मते पब्लिक आईपी दरकार तो मैं एटी कोन करियो ना grep public_ip तो मते कोन स्टेट फाइल भीतर में सर्च करे अछि तो से हमको पब्लिक आईपी दे देला so easily we can get it so linux command to maybe familiar अछि then you can go ahead and use this one okay तो बहुत किछि विषय हमें जानि ले केमति त हमें यूज करि परिबा terraform validate terraform format terraform show आ attribute केमति यूज करिबा वैल्यू तो बर्तमान हम attribute देखले जेटा कि हम डिस्प्ले कला हमें नेक्स्ट प्रोग्राम रे हम लैब रे हम देखियो केमति हम attribute को रेफरेंस करिके गुटे attribute जो वैल्यू बा प्रॉपर्टी को सेव करिबा हमरा और आर्गुमेंट को दबा राइट ता विषय हमें जानिबा
we can see this way, right? तो आमे आज बहुत किसी जानिले attributes output value उपरे terraform format उपरे terraform validate उपरे semantics उपरे terraform source and all. So next class रे आमे जानिबा ओके versioning उपरे भी देखितले आमे versioning केमती कोन यूज कराउची, right? Completely versioning. तो log file विषय भी आमे जानितले आजी तो logs file आमे देखियो जेतबळे देखो नॉर्मली आमे तो ls-lt मु मारिली बा ls-l मारुची तो हम किछि देखुनी, राइट? जेतु log file गोटे hidden files रे, right? तो मुझे एटी ls-la मारिबी तो we can find this log file. तो हमें log file भी तो देखिबा देखो एई पर्टिकुलर कंप्लीट डिटेल्स हमर terraform प्रोवाइडर अछि पूरा कंप्लीट पाथ दोछि प्रोवाइडर पाथ को पाथ का यूज होछि वर्जन कोन 6. जोटा हमर लेटेस्ट वर्जन हम यूज करछे 6.28 constraint कोन आ ये हैश जोटा हैश त जे कीटा हमर से हिसाब से हमर terraform काम करूछि, राइट? ए पर्टिकुलर मोय यार लोअर वर्जन्स वर्तमान मुझे द्वारा यूज करी, राइट? लेट्स सी द एग्जांपल मुझे द्वारा it is 6.28 मुझे वे 5 point something मते terraform block रे changes करियर अछि तो it is 6.28 जगह मुझे वर्जन को चेंज कर दोछि 5.28 or something. ओके लेट्स सी एटा मते अलाउ करिवो कि नाही कोन एरर हमको मिलुछि. ओके terraform डायरेक्टली मैं अप्लाई करछि बिना प्लान रे. लेट्स सी तो inconsistent dependency log file तमे लोअर वर्जन हम करि परिबनी से कहू the following dependency selections recorded in the log file are inconsistent with the current configuration file. Logged version selection is 6.20 do not match the updated version constraint 5.28. To update the log dependency selections either we can use terraform init upgrade आमदे init upgrade करिया से काम करिवो ताको upgrade करि दबो. ओके but जदि तमे डायरेक्टली init मारियर अछि then we should first delete the log file and then we can use init. This way you can do. तो हमर હવે tf state file विषय रे जानिले आ गुटे तमे देखुतबो जो tf state file रहउची सेतरे गुटे बैकअप फाइल रहउची. तो बैकअप फाइल ता कोन एक्चुअली तो हमें देखो हमें जे कोनसी एनवायरनमेंट रे भी काम कोचे प्रोडक्शन हो डेवलपमेंट हो टेस्ट हो जे कोनसी न्यू चेंजेस करबा आगु हमें किछि गुटे बैकअप नउचे, राइट? तो सिमिलरली terraform रे हमें कोन जे कोनसी कॉन्फ़िगरेशंस नवा कॉन्फ़िगरेशन किछि एग्जीक्यूट करछे बा कोन करछे सेतरे कोन छै ना तब सी ऑटोमेटिकली गोटे बैकअप नउची फाइल रे ता परे कोन कॉन्फ़िगरेशन फाइल से क्रिएट करूची. बुझि पला तो मु एबे धरो एबे हमर जो बैकअप थिबो ना हमर जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन फाइल रो बैकअप ता अछि से तबरे एटा terraform फाइल ता में नुवा आजी जोटा करछि. तो बर्तमान मु जदी एबे terraform डिस्ट्रॉय करबी से कोन करियो ना बर्तमान जो करंट स्टेट अछि तार से कोन करियो ना बैकअप नै छियो. ओके तो मु एबे terraform डिस्ट्रॉय मारछि terraform destroy. तो बिफोर यूजिंग terraform destroy मते चेंज करियर अछि हमरो कोन जो प्रोवाइडर ब्लॉक रे हम यूज करथि राइट 5 टा 6 यूज करतो छ बट terraform destroy. So let's see ये जो स्टेट फाइल अछि एटा कोन बर्तन कमी जीवन टोटल जहा भी कंटेंट थिबो सब उडी जीवो तार बैकअप गोटे नै जीवो. Okay so it's destroying all this. And 3 resources destroyed. So 3 resources are destroyed, right? So हमें जदि एबे देखिबा हमर tf state files देखो आर साइज कंप्लीटली कमी जाय छी प्रीवियस रो जा साइज तला बर्तमान बैकअप रो फाइल साइज से हे जाय छी, राइट? तो बैकअप फाइल साइज हे छी बट terraform ए फाइल ता बर्तमान हमें देखिबा आदर किछ नथिबा जेता हमर करंट स्टेट डिलीट हे जाय छी, राइट? देखो किछ नै
केवल terraform versions कौन यूज से डिटेल्स अच्छे आ बाकी जितो कंप्लीटली बड़ साइज रो फाइल थिले राइट नहीं बट सेम जिंस बर्तन आमे जि बैकअप को देखिबा जहा प्रीवियस करंट स्टेट रो थिला राइट तो सब जगह हमर बैकअप रे रहि जायति किछि भी ट्रबल शूट करियर अछि बा इंस्पेक्शन करियर अछि कंप्लीट डिटेल्स रे हमें पाइ छिबा देखो कंप्लीट डिटेल्स राइट तार एएमआई कौन यूज हेतला कौन आईडी इंस्टेंस आईडी आईपी कौन की सब कंप्लीट डिटेल्स एड्रेस स्टोर हेति थिबो तमे अच्छा ओके तो ये वे रे terraform रे एक्चुअली काम होछि गुड सो आज ପାଇଁ ଠିକ ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ କଣ କରିବା ନା variable ଉପରେ ପଢିବା variables କେମିତି ୟୁଜ ହେଉଛି ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଆଉ ତିନିଟା କ୍ଲାସ ଆମେ terraform ସାରି ଦବା ଯଦି ବି terraform ପଢିବାର ଅଛି ରାଇଟ୍ ତ variables ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହୁଛି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଭ କରିକିରି ଫାଇନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି ଆମେ ସାରି ଦବା ଆଉ 2-3 କ୍ଲାସ ରେ terraform ସରିଯିବ